Hello students, we are discussing the question answers of lesson number 7, and in previous video we have discussed the brief question answers of this lesson. Now today we will start the E part, that is answer the following questions. So E part is answer the following questions. Now the first question is, what are nutrients? So what are nutrients? What do you think? We have studied in the chapter what are nutrients. So nutrients are the substances present in the food. तो nutrients होते हैं वो substances होते हैं जो कहाँ present होते हैं? Food में present होते हैं. And why are they? Why are they necessary for our body? So why they are important for our body? Because they help us to give energy. You can say they give us energy, help us to grow, and keeps our body disease free and healthy. So the answer is, what are nutrients? So nutrients are substances. Nutrients are substances present in the food. Present in the food. And now the second question. Second part of this question, why are they necessary for our body? So they are necessary for our body because they provide what they provide. They provide us energy. वो हमको एनर्जी देते हैं. For example, carbohydrates and fats gives us energy and help us to grow. So which nutrient help us to grow? That is proteins. Help us to grow, keep us healthy, disease free and strong. So which nutrient keep us healthy, disease free and strong? That are vitamins and minerals. So in this way they are necessary for our body. So they provide us energy, help us to grow, keep us healthy, disease free and strong. Now the second question is question number 2. Why should we eat? Why should we eat a balanced diet? Yes, why should we eat a balanced diet? Now what is a balanced diet? First of all, balanced diet. So what is a balanced diet? You all know, a diet which contains all the types of nutrients in proper amount, and it should also contain roughage and water in proper amount, right? So different types of nutrients होने चाहिए balanced diet में. अब क्यों हमें खानी चाहिए balanced diet? That is the question. Why should we eat a balanced diet? So you know that different nutrients perform different functions, and balanced diet contains all the types of nutrients. So different nutrients perform different functions in our body and help us to stay healthy, right? And absence of any one of the nutrient
अगर एक भी न्यूट्रिएंट एब्सेंट हो जाए हमारे डाइट में, then what will happen? Then it may cause a disease. अगर हमारी डाइट में कोई भी न्यूट्रिएंट एब्सेंट रहे बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक कोई न्यूट्रिएंट एब्सेंट रहे, हम कोई न्यूट्रिएंट ना लें, then what will happen? हमको डिजीज लग जाएगी. It may cause disease. So that's why we should eat a balanced diet. क्योंकि बैलेंस डाइट अगर हम खाएंगे तो हम सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में लेंगे, और न्यूट्रिएंट्स अगर प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो हमें किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी. सो दैट इज द रीजन. So different nutrients perform different functions in our body and help us to stay healthy. So our answer is different nutrients perform different functions in our body and help us to stay healthy. But the absence of any one of the nutrient may cause a disease, right? So hence we should eat a balanced डाइट. तो इसलिए हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सारे न्यूट्रिएंट्स अगर डाइट में प्रेजेंट होंगे तो हम कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे. और अगर एक भी न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में से कम हो जाए या यू कैन से एब्सेंट हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? हमको डिजीज लग जाएगी एंड it may cause a disease. Hence we should eat a balanced diet. Now, why is it advisable to eat food items like whole fruits, salads and whole grains? So हमें whole fruit, salads and whole grains खाने के लिए क्यों कहा जाता है? उसमें ऐसा क्या चीज होता है जो कि हमारे लिए अच्छा है? So why should we eat? So the question is, why is it advisable to eat food items like whole fruit, salads and whole grains? Now try to understand the question. कि जो ये होल फ्रूट मीन्स जैसे हम फ्रूट को क्या करते हैं, कई बार पूरा उसका कवर निकाल के, छिलका निकाल के उसके बाद हम उसको खाते हैं, तो हमें उसको पूरा खाना चाहिए. वाई इट इज एडवाइज कि पूरा खाओ, सैलेड्स खाओ. और होल ग्रेन मीन्स ऐसे ही जो ग्रेन्स है उसको भी हम ऐसे ही पूरा सबूत खाएं, चाहे पका के खाएं, कैसे भी खाएं, पर सबूत खाना चाहिए. वाई इज इट एडवाइजेबल? सो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर कि हमें ये क्यों खाना चाहिए, इसमें ऐसा क्या चीज प्रेजेंट है
जिसकी वजह से ये एडवाइस किया जाता है हमको खाने के लिए. So we will discuss it in our next video, that why is it advisable to eat items like whole fruits, salads and whole grains, and also the remaining questions of this lesson. Thank you.